मुंबई के राजभवन में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देश के सफल उद्यमियों, विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों और कोरोना योद्धाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में मिस्र के वाणिज्यिक राजदूत इटिया अबू एल नागा, मुंबई के उप उच्चायुक्त, बांग्लादेश से मोहम्मद लुत्फोर रहमान और ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी और GIBF की डायरेक्टर दीपाली गडकरी और संरक्षक योगेश दुबे जैसे गणमान्य लोग उपस्थित रहे। I am Global President. Today's occasion is very important for Global India Business Forum. So it's a 4-year-old forum, but now it's achieved a lot of things in last 4 years because this is now really an international forum. Today as Rajbhavan in Maharashtra, Mr. Bhagat Singh Koshiyari ji has specially invited Global India Business Forum team to honor all our colleagues. At the same time, we organize a very big award program today, and I am really happy. The awardees are from the various fields, from the top business companies in India. There are big corporates, there are MSME sector. Also, we honored the guys from the arts, music and acting. So GIBF is really achieving a lot of things in India and abroad now. Today in this program there are one Consul General of Egypt and High Commissioner of Bangladesh also present, and this proves that every GIBF program is been attended not just by the Indian but the Consul General and the Ambassador of various countries. Global India Business Forum is very proud to conduct today's National Business Excellence and Achievers Award at Raj Bhavan. We are very honored to have the Honorable Governor of Maharashtra, Shri Koshiyari ji, for this event as the chief guest. Also, we were honored to have two Consul Generals, Consul General of Bangladesh and Consul General of Egypt as guest of honor for this program. And this event was a very successful, where we felicitated all businessmen from all over India from different categories. Not only businessmen, we also felicitated the people from art, singing, acting and different fields. And Global India Business Forum is going at global level, growing step by step. And congratulations and thanks to all the participants for today's event. Thank you. ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने कल 23 सितंबर के दिन राजभवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें हमारे आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों मुझे जो अवार्ड दिया गया, उसके लिए मैं हमारे गवर्नर साहब का और आयोजक ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, तो मैंने तहे दिल से उसे पसंद किया, जिसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। Yesterday, we, Franke Faber, received this prestigious award of Best Kitchen Appliance Brand in the country, and from none other than Bhagat Singh Koshiyari ji, the Honorable Governor of Maharashtra. It is indeed quite prestigious an award for all of us, especially because we have two plants in India. One is in Pune and the other is in Aurangabad. So basically we are a Maharashtrian based company which sells products across the country. And I must say that it was immensely encouraging for us to have received this award. Thanks to everyone, specifically the organizers. It's not easy to get all the people under one roof, especially in this COVID time. And the dignitaries that I saw over there was really heart welcome. I am thankful to Global India Business Forum for honoring me the Business Excellence and National Achievers Award from Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshiyari ji. I am thankful to Global India Forum, Dr. Jitendra Joshi, the President of this forum, for giving me an opportunity and making me a part of this forum. This award is really a motivational factor for a business entrepreneur, and I am sure I will carry this memory for a long time.
और साथ ही कार्यक्रम की सफलता को लेकर ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कहा, भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए GIBF लगातार प्रयासरत है। देश में बिजनेसमैन को मोटिवेशनल स्पोर्ट्स और प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे अवार्ड सेरेमनी का आयोजन GIBF देश के अलग अलग राज्यों में करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।